सगळे सिग्नल ॲम्प्लिफाय करण्यासाठी ॲम्प्लिफायर सर्किटचा उपयोग होतो आणि आपण तेही बघितलं की तो ॲम्प्लिफाय कसं करतो की बेस करंट आणि कलेक्टर करंट. तर कलेक्टर करंट डिवायडेड बाय बेस करंट हा जो रेशो असतो तो ॲव्हरेज 100 असतो, पण तो 20पासून 200 पर्यंत असू शकतो. तर इतक्या फॅक्टरनी आपण तो करंट इन्क्रीज करू शकतो आणि त्यानुसार व्होल्टेज सुद्धा इन्क्रीज करू शकतो. आता शेवटला टॉपिक आहे त्याचं नाव आहे लॉजिक गेट्स. In 11th standard we studied continuously varying signal. Continuously varying signal ला आपण analog signal असं म्हणतो. म्हणजे आता जर ही साऊंड वेव्ह, आता समजा मी बोलतोय आणि तुम्हाला साऊंड वेव्ह ऐकू येते, ती जर तुम्ही प्लॉट केली that will be a continuous signal, analog signal. For example, a sinusoidal voltage is an analog signal. In an analog electronic circuit, output signal varies continuously according to the input signal. पण अजून एक प्रकारचं सिग्नल त्याला म्हणायचं डिजिटल सिग्नल. अ सिग्नल विच कॅन हॅव ओनली 2 discrete values. It is called a digital signal. For example, a square wave is a digital signal because it has only 2 values, high and low. Output voltage can have only 2 values or 2 states, either low state that is 0 volt or high state that is plus 5 volt. An electronic circuit that handles only digital signal म्हणजे तो फक्त लो आणि हाई, लो और हाई ऐसे दो ही सिग्नल को वो प्रोसेस कर सकता है. इन बिटवीन सिग्नल्स वो एनालाइज नहीं कर सकता, उससे वो कुछ मीनिंग नहीं निकाल सकता. ऐसा अगर सर्किट है then that is called a digital circuit, and the branch of electronics which deals with such digital circuits is called digital electronics. तो सबसे पहले मीन्स लॉजिक गेट पढ़ने से पहले हमें एनालॉग और डिजिटल इसका फर्क समझना चाहिए. So analog signals are the signals which are continuously varying. एनालॉग सिग्नल्स. सबसे पहले एनालॉग और डिजिटल इसको हम डिफाइन करेंगे और बाद में लॉजिक गेट्स ये डिजिटल सर्किट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो एनालॉग सिग्नल्स signals which are continuously varying with respect to time. Signals which continuously vary with time. They are called analog signal. Examples of analog signal is sinusoidal signals or sinusoidal waves. Sinusoidal waves are analog signals. They continuously change with time. As against it, there are also digital signals. Digital signals are signals. A signal which can have only 2 discrete values. A signal which can have only 2 discrete values.
Discrete means specific. And these values are low or 0. We call that low as 0. That is 0 volt. And high, we call it as 1, and that is plus 5 volt. Then similarly we define a digital circuit and digital electronics. Digital circuit an electronic circuit that handles only digital signals. Electronic circuit that handles only electrical signals. Only digital signals. That is called a digital circuit. And branch of electronics which deals with digital circuit is called digital electronics. Digital electronics. Branch of electronics which deals with digital circuits. So these are some definitions which are important for learning the logic gates. Logic gates are the digital circuits which has one or more input signal but only one output signal. So a logic gate is an electronic circuit or digital circuit with one or more inputs but only one output. Logic gate it is an digital circuit with one or more inputs but only one output. Only one output. It is a switching circuit that follows certain logical relationships between input and output voltages. Therefore, they are generally known as logic gates. Gates because they control the flow of signal or the information. Output of a logic gate can have only one of the two values, 1 or 0. That is 0 voltage or
high voltage, that is plus 5 voltage, plus 5 volt voltage. Okay. So there are 5 common logic gates and their names are NOT gate, AND gate, OR gate, NAND gate and NOR gate. Each logic gate is indicated by a symbol and its function is defined by a truth table. ये मैथमेटिक्स में शायद तुमने लॉजिक के चैप्टर में ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी होंगी. A truth table shows all possible combination of the input and the corresponding outputs. Truth table defines the function of the logic gate. Truth table helps to understand the behavior of the logic gate. All the logic gate can be analyzed by constructing a truth table. A mathematical statement that provides the relationship between input and output of a logic gate is called a Boolean expression. So what is a truth table? Truth table is all possible combinations of input and corresponding output. And what is a Boolean statement? For every logic gate there is a specific Boolean statement. So first define what is the truth table. The truth table the table that shows all possible combinations of input a table that shows all possible combinations of the input and corresponding outputs. A Boolean expression, the mathematical statement that provides Boolean expression. So every logic gate has a Boolean expression. We define the function of that logic gate. So Boolean expression is a mathematical statement that provides a mathematical statement, that means an equation that provides the relationship between the input and output. The relationship between the input and the output of a logic gate. So this is the background, and now we will define gates one by one. First gate is a NOT gate. This is the simplest of all gates. It's the most basic logic gate. It has one input, one output. It produces high if input is low,
and it produces low if input is high. So input is just opposite of output. So the NOT gate is shown by this symbol of a diode, but this is not a diode. There is a bubble at the end of it. And the Boolean expression is y is equal to x bar. X is your input, y is your output. Correct. So what is the table? Truth table. If input is 0, your output is 1, and if your input is 1, your output is 0. So it's also called an inverter. NOT gate का दूसरा नाम क्या है? Inverter. Because it inverts the voltage, low to high and high to low. Then the next gate that we study is OR gate. OR gate. As the name suggests, output is high when one of the inputs is high. At least means एक भी अगर इनपुट हाई है तो इसका आउटपुट हाई होता है. तो द बुलियन स्टेटमेंट y इज इक्वल टू a, और हम लिखते हैं प्लस साइन से a और b. सिंबल वी विल शो OR गेट विथ 2 इनपुट्स. देयर कैन बी मल्टीपल इनपुट्स, 2 से ज़्यादा भी इनपुट्स उसके हो सकते हैं. करेक्ट. तो दिस इज योर y. The output inputs are A and B. Now as we are dealing with 2 inputs, there are 4 possible combinations, isn't it? Inputs, and we will write output. Inputs क्या है? A है input और B input है, output is Y. तो क्या क्या input हो सकते हैं? दोनों input 0, फिर B is 1, only B is 1, then only A is 1, and finally both are 1. तो इसका लॉजिक ये कहता है कि आउटपुट इज हाई व्हेन आइदर इनपुट इज हाई. आउटपुट हाई when one or more inputs are high. When one or more inputs are high. So for the first case 0 0, output will be 0. But for all the other 3 inputs, output will be high. So the truth table is 0 1 1 1. So output is high when at least one input is high. तो यहाँ पे ये input high है, यहाँ पे ये high है, यहाँ पे दोनों high है. So when at least one input is high, output is high. That is the OR logic. ठीक है. तो OR logic gives you options, and if any of the option is true, then the output is true. AND is not like that. AND requires all inputs to be high, then only the output is high. So AND gate, and the symbol of AND gate is like this. We will show the first the Boolean expression is like this. Y is equal to A, AND की जगह पे ऐसे डॉट लिखते हैं, A dot B. We have 2 inputs, and ऐसे इस तरह से दिखाया जाता है. This is AND gate. So this is your Y, this is your A, this is your B. So AND gate में output is high only when all inputs are high. यहाँ पे हमने 2 ही इनपुट दिखाए, लेकिन 2 से ज़्यादा भी इनपुट हो सकते हैं. A, B, Y. Again we have 4 combination, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1.
These are 4 possible inputs. They are the first 4 binary numbers. Correct. So इसका लॉजिक कहता है कि आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आ रहा है. तो लास्ट में सिर्फ आउटपुट हाई, बाकी तीनों का जीरो, बाकी तीनों का लो. सो आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई. तो इन वर्ड्स वी कैन राइट आउटपुट इज हाई only when all inputs are high. Otherwise input is low. अगर एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट विल बी लो. दिस इज द लॉजिक ऑफ एंड गेट. अभी जो बाकी के 2 गेट है नैंड और नॉर, they are just opposite to and or. So when I say NAND gate, इसका मतलब है we have a NOT gate in front of a AND gate. तो NAND gate का लॉजिक कैसे होगा? First write the name of the gate, NAND gate. देन उसका बुलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a एंड b और उसकी कॉम्प्लीमेंट यानी उसका उल्टा. हाउ डू वी शो अ NAND गेट? विल शो NAND गेट हैविंग 2 इनपुट्स. अगेन देयर कैन बी मल्टीपल इनपुट्स, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है. यहाँ पे एक बबल डालते हैं तो बबल स्टैंड्स फॉर द इन्वर्जन. तो a b और उसकी कॉम्प्लीमेंट, ए बी उसकी कॉम्प्लीमेंट, लाइक दिस वी डू. इनपुट्स आर ए एंड बी. अगेन वी राइट द इनपुट्स. ये जो लिख रहे हैं वो ट्रुथ टेबल लिख रहे हैं. इनपुट आउटपुट का जो टेबल लिख रहे हैं हम, दैट इज द ट्रुथ टेबल. ए बी 2 इनपुट है, वाई आउटपुट है. 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1. अब हमें क्या करना है? जो एंड है उसका उल्टा करना है. तो एंड का लॉजिक था कि व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई देन ओनली द आउटपुट हाई. उसका उल्टा करेंगे तो इट विल 1 1 1 0. दैट मीन्स द आउटपुट इज हाई व्हेन एटलीस्ट 1 इनपुट इज 0. एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ एंड. NAND is exactly opposite of AND. यानी AND का इन्वर्जन है वो. आउटपुट इज हाई when at least 1 input is low. When at least 1 input is low. अगर कोई भी एक इनपुट लो है तो ही आउटपुट हाई होगा. तो जब सारे इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट लो होगा. तो वी कैन ऑल्सो राइट इट इज दैट आउटपुट लो ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई. ऐसे भी लिख सकते हैं. आउटपुट लो ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई. अगर सारे इनपुट हाई है तो ही आउटपुट लो होगा, अदरवाइज आउटपुट हाई होगा. फिर बात करेंगे नॉर गेट की. एंड यू मस्ट हैव गेस्ड नॉर इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर. ये ऑर की कॉम्प्लीमेंट है. तो y इज इक्वल टू a और b और उसकी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, और उसकी कॉम्प्लीमेंट. तो सिंबल कैसे? विल शो द नॉर गेट हैविंग 2 इनपुट्स बट देयर कैन बी मल्टीपल इनपुट्स. और भी ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं. ये और गेट दिखाया हमने. यस, और गेट को एक ऐसे बबल डालेंगे दैट विल
टेल यू द इन्वर्जन. सो y इज इक्वल टू a और b एंड उसकी कॉम्प्लीमेंट इनपुट्स आर a एंड b. तो ट्रुथ टेबल लिखेंगे उसका. इनपुट्स, आउटपुट, ए और बी इनपुट्स. काही बोलायचं नसेल तर म्यूट करा बरं, जे डिस्टर्बन्स येतोय. 1011. डू यू हॅव एनी क्वेश्चन? काही डाऊट आहे का तुम्हाला? नाही ना? असेल तर बोला, नहीं तो म्यूट करा स्वतःला. तो नॉर का लॉजिक ऐसा है कि और के एग्जैक्टली ऑपोजिट लॉजिक. करेक्ट. तो आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, यानी 1, बाकी सब 0. तो आउटपुट इज हाई अल्तिशा, श्रेयस म्यूट करा. अल्तिशा प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. Output is high only when all inputs are low. So this you have to remember. दिस यू हैव टू रिमेंबर कि उसके लॉजिक क्या है. हमने अभी तक 1 2 3 4 5 गेट देखे और एक गेट देखना है, लेकिन उसके पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले तो नॉट गेट था. नॉट गेट इज वेरी सिंपल. इट हैज ओनली 1 इनपुट 1 आउटपुट एंड आउटपुट इज ऑपोजिट ऑफ इनपुट. तो ये इसको याद रखना बहुत आसान है. तो अगर इनपुट लो है तो आउटपुट हाई, और अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट लो. फिर दूसरा हमने और गेट देखा. आउटपुट इज हाई व्हेन 1 और मोर इनपुट्स आर हाई, मीन्स व्हेन एटलीस्ट 1 इनपुट इज हाई, एट दैट टाइम योर आउटपुट इज हाई. फिर हमने एंड गेट देखा कि एंड गेट में आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई. आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई. फिर नैंड देखा विच इज ऑपोजिट टू एंड. आउटपुट इज हाई व्हेन एटलीस्ट 1 इनपुट इज लो, और आउटपुट इज लो ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई. और फिर नॉर गेट देखा कि द आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो. लास्ट गेट इज एक्सक्लूसिव ऑर गेट, XOR. इट इज कॉल्ड XOR और एक्सक्लूसिव OR. And its logic is slightly different than the other. इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग है. XOR logic gate is a very useful circuit that can be used in many different types of computational circuit. Ability of XOR gate to compare two logic level and produce output value depends on the input condition, is very useful in computational logic. Output is high when टू इनपुट टर्मिनल्स आर एट डिफरेंट लॉजिक लेवल्स. तो इसका जो एक्सक्लूसिव और का जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो भी थोड़ा अलग है. ए और फिर XOR ऐसे लिखते हैं सर्कल, एंड दैट इज इक्वल टू ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट. ये उसका लॉजिक है. इट्स सिंबल इज और जैसा ही है सिंबल, लेकिन यहाँ पे ऐसे एक और इसको एक्सक्लूसिव. तो दिस इज A एंड B, दिस इज योर आउटपुट Y. तो उसकी इनपुट्स A और B और उसका आउटपुट Y. इनपुट के कॉम्बिनेशन वही है 0 0 0 1 1 0 1 1. तो दीज आर सेम फॉर ऑल लॉजिक गेट्स.
यहां पे आउटपुट इज हाई व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट, यानी ये 0 1 है तो आउटपुट 1, 1 0 है तो आउटपुट 1। देखिए जब इनपुट सेम है, अभी इसका यूज क्या है देखो, ये एडिशन में जो कैरी होती है ना, यानी 1 + 1 इज 0 विथ कैरी 1, तो ये ऐसे कंपटीशन करने के लिए XOR हमें उपयोगी होता है। सो हियर आउटपुट इज हाई व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट। तो जब अलग अलग इनपुट्स है तब आउटपुट उसका हाई है। सो दैट्स इट, दीज आर द 6 लॉजिक गेट्स। ये 6 लॉजिक गेट्स हमने देखे। तो लॉजिक गेट के ऊपर सिंपल सवाल आ सकते हैं कि राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द लॉजिक गेट, और दे विल गिव यू द सर्किट एंड दे विल टेल यू टू फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट। तो मैथ्स में भी अपने ये लॉजिक अलजेब्रा या बुलियन अलजेब्रा सीखा है, तो इसका ही एक्सटेंशन है। यूजिंग ट्रांजिस्टर्स वी कैन मेक द लॉजिक गेट, बट दैट इज द बियॉन्ड द सिलेबस ऑफ दिस स्टैंडर्ड। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज करके कैसे लॉजिक गेट बनते हैं ये नहीं सीखना है, लेकिन ये इनके ट्रुथ टेबल्स, लॉजिक गेट के ट्रुथ टेबल्स ये हमें सीखने हैं। तो 6 लॉजिक गेट्स, जस्ट रिमेंबर देयर रूल्स, देयर ट्रुथ टेबल्स, इक्वेशंस, उनके बुलियन इक्वेशन। नॉट गेट का बुलियन इक्वेशन क्या देखा हमने कि y इज x बार और x कॉम्प्लीमेंट, और का a + b ऐसे लिखते हैं। और का लॉजिक क्या है, आउटपुट इज हाई व्हेन वन ऑफ द इनपुट इज हाई। फिर एंड का क्या है, आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। फिर नैंड का ऑपोजिट ऑफ एंड, आउटपुट इज हाई व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज लो। और नॉर गेट का आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो। XOR गेट का output is high when inputs are different. Okay, so that's